The most common data types in SQL are numeric, string, datetime, boolean. ये मेजरली यूज होने वाले डेटा टाइप्स SQL. ठीक है. So by using these data types, we can store the values in table or in the programs. And numeric, which holds the number value. String, which holds the text information, character information. Date, जो कि date store करेगा. Time, जो कि time store करेगा. Boolean, which stores the true false values, true false or null values. So these are generic types of data types in SQL. And within numeric, we have list of data types. And again, these data types varies from database to data. कुछ database में कुछ ज़्यादा डेटा टाइप्स रहेंगे, कुछ कम डेटा टाइप्स रहेंगे, या फिर एक ही डेटा टाइप को अलग अलग नाम से अलग अलग डेटाबेस में यूज़ कर. ठीक है. जैसे कि अभी पोस्टग्रेस में हम लोग देख सकते हैं इंटीजर, इंट, बिग इंट, स्मॉल इंट, सीरियल, बिग सीरियल, न्यूमेरिक, और भी डेटा टाइप्स हैं जो नंबर स्टोर करने के लिए पोस्टग्रेस में यूज़ होता है. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सी couple of them or few of them how we are going to use. हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए कि डेटा टाइप क्या होता है, नंबर्स के लिए हम कौन से डेटा टाइप कर सकते हैं, किस टाइप के नंबर के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे, व्हाट इज द रेंज ऑफ दैट डेटा टाइप, उसमें रेंज का क्या यूज है, या फिर वो कितना मेमोरी साइज एलोकेट करता है किसी भी एक वैल्यू के लिए विद इन दी कॉलम. ठीक है. So let's take an first numeric data type. We have the very first data type called integer, जिसको हम int भी कहते हैं. Integer also we can call it as int, which can store numbers, which can stores a complete number, जैसे कि 1 2 3 4 जो भी है. ठीक है. वो numbers integer can store, and the range for this integer or int data type is till 1 to this highest number integer can store the numeric value, minus में 1 to -1 to till this highest number. यहाँ तक ही हम लोग इसमें नंबर स्टोर कर सकते हैं. अगर हमने उसको एक्सीड कर दिया, 649 कर दिया, तो देन इट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट वैल्यू, वो रेंज का एरर थ्रो करेगा. सिमिलरली फॉर बिग इंट एज वेल, बिग इंट का रेंज टिल दिस माइनस में याद. एंड टू स्टोर वन बिग इंटीजर वैल्यू, it needs 8 byte of integer memory space. Whereas small int, which stores 2 byte, serial, which needs 4 byte, big serial, which needs 8 byte of integer value. Serial and big serial, these two data types are identity data types, which are used to create the incremental number tape. एक सीक्वेंस नंबर जनरेट करने के लिए इस वाले डेटा टाइप का यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिक और डेसिमल. हम इसे डेसिमल से भी डिफाइन कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिक से भी डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हमें स्टोर करना है. ठीक है. फ्लोटिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल 10.15, 1000.40, जो भी प्रेसिजन है, दैट type of numeric values you can store in the numeric data type. Okay. So now we will take one example where I'll explain all of these. So let's come to post this. Let me paste this. Create table, example data. The first column is, as of now, don't try to understand query कैसे लिखा है या फिर क्वेरी कैसे लिखना चाहिए. दैट इज नॉट आवर इंटेंशन.
Our intention is simply understand what is data type. We are not looking for how to create table और वो syntax क्या है, वो हम लोग नहीं देखेंगे. हमें सिर्फ देखना है डेटा टाइप का यूज क्या है, कौन सा डेटा टाइप क्या टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा. ठीक है. नाउ क्रिएट टेबल एग्जाम्पल डेटा. टेबल का नाम मैंने दिया एग्जाम्पल डेटा. फर्स्ट कॉलम इज आईडी, सेकंड कॉलम इज बिग आईडी, थर्ड कॉलम इज स्मॉल वैल्यू, फोर्थ इज इंट वैल्यू, फिफ्थ इज बिग वैल्यू, लास्ट इज प्राइस. पहले के लिए मैंने सीरियल डेटा टाइप लिया है, दूसरे के लिए मैंने बिग सीरियल, थर्ड के लिए स्मॉल इंट, देन इंट, बिग इंट एंड डेसिमल. न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के सारे डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पे कवर. ठीक है. सो फॉर दैट आई विल जस्ट एग्जीक्यूट दिस क्वेरी. लेट्स हैव अ लुक. Table is not created, so I need data into it to understand what type of value we can insert and what type of values we cannot insert in a particular data type. कि कोई भी data type पकड़ लो, जैसे कि serial है, serial में क्या टाइप के values स्टोर हो सकते हैं, क्या टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं हो सकते, उसका रेंज क्या है, वो सब कुछ हम लोग इस एग्जाम्पल से देखेंगे. I already have an insert statement here. Static insert statement. So insert into example data. इसी टेबल में जो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, तो इसी टेबल में मैं वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँ. So first column is ID, second column is big ID. मैं इन दोनों कॉलम्स में डेटा इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ. Why? That I'll tell you later. I'm inserting the values into small value, int value, big value and price. ठीक है. Small value is small int जो 2 bytes का डेटा स्टोर कर सकता है इस डेटा टाइप में. जो टेबल में एक सेल होता है, उसमें जो भी एक वैल्यू ऐड होगी उसका साइज रहेगा 2 bytes. वैसे ही इंटीजर का 4 bytes, बिग इंट का 8 bytes, डेसिमल का वैरी होता है वैल्यू टू वैल्यू व्हेन यू आर हैविंग इंसर्टिंग द वैल्यू इनटू इट. ठीक है. सो इफ आई इंसर्ट दिस, इफ आई रन द क्वेरी रिटर्न्ड सक्सेसफुली. लेट्स चेक द डेटा इनटू इट. select star from sample underscore data. Let me run this query. See, मैंने पहले एंड दूसरे कॉलम में डेटा स्टोर नहीं किया था, सिंस these are serial and big serial data types. ID और big int ये बिग सीरियल एंड सीरियल टाइप के डेटा टाइप्स. इन दोनों कॉलम में मैंने कुछ भी डेटा स्टोर नहीं किया था, बल्कि मैंने सिर्फ इतने ही कॉलम्स में डेटा स्टोर किया था. लास्ट 4 यू कैन सी 1, 2, 3 एंड 4 वैल्यूज. ऑल आर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. देन इन दोनों कॉलम्स में वैल्यू क्यों आई है? व्हाई दीज 2 कॉलम्स हैविंग वैल्यूज? पहले तो दीज आर identity columns. When you are having serial or big serials, automatically one sequence number will be getting generated into the database, right? So automatically एक sequence number generate होगा and वो number उस column में store करेगा. Since we have serial data type, why big serial? क्योंकि serial ये data type integer का alias है. इंटीजर के जो भी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि 4 bytes ऑफ इंटीजर वैल्यू इट इज गोइंग टू स्टोर इन सीरियल डेटा टाइप. बिग सीरियल स्टोर्स 8 bytes ऑफ वन वैल्यू इनटू अ सेल. अगर हमें बहुत बड़ा सीरियल नंबर जनरेट करना है, तो हम बिग सीरियल्स के लिए जाएंगे. जैसे कि
बिग इंट का रेंज इतना बड़ा रेंज है, राइट? दिस इज रेंज ऑफ बिग इंट। इतना बड़ा नंबर आप लोग वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, और इंट में आप सिर्फ इतना ही वैल्यू जनरेट कर सकते हो, राइट? सो इफ वांटेड टू जनरेट अ वेरी बिग सीक्वेंस वैल्यू, तो आप लोग बिग सीरियल्स के लिए जा सकते, ठीक है? इज दिस क्लियर फॉर सीरियल एंड बिग सीरियल? Yes, sir. So let's try to insert one more record here. We have one more record here. Let's check. Automatically, the next sequence number will be generated for first and second column, serial and big serial इनके data types है, ठीक है? So why to use serial? Why to use big serial? If you want to create a large serial number or sequence number, then go for big serial. If you want to have a small range of sequence number you would like to create, then go for normally serial. Serial is what it is? Serial क्या है? Serial data type कौन से data type का alias है? Which is integer data type का alias. उसके properties वो उसके साथ, right? The range of integer same as the range of serial data type. Big int का जो भी range है उतना ही range big serial का भी है, लेकिन with addition to that, automatically, even if you are not providing any value to the serial or big serial, automatically these will generate the sequence number into the column. ये हो गया serial and big serial के बाद, ठीक है? So now small int, big int, इनका range तो हमने पहले ही देखा है. So what values we can insert? According to the range, we can insert the value into the small int, big int and decimal. अब हमने decimal में क्या दिया है? Precision and scale. The first thing is precision. The second parameter is scale. Precision it means what? आपके न्यूमेरिक वैल्यू में जो भी पॉइंट के पहले आने वाला है, डेसिमल पॉइंट के पहले आने वाला है नंबर या फिर डिजिट्स, दैट इज प्रेसिजन. और डेसिमल पॉइंट के बाद में जो भी आने वाला है, दैट इज योर स्केल. मुझे चाहिए प्रेसिजन, फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू चाहिए आफ्टर पॉइंट. बिफोर पॉइंट आई वांट 10 वैल्यू, 10 digits. Then I can go for 10 precision and 5 scale. ऐसे हम लोग decimal point values यहाँ पे स्टोर कर सकते. Clear everyone? String data type, or we can also call it as the character or text data type, जहाँ पे हम लोग text information स्टोर कर सकते हैं. यहाँ पे हम लोग string data insert कर सकते हैं table. So the second example we are going to see is about string data type. Under string, we have again different data types: char, varchar, and text. The char data type is fixed in length. ठीक है, char data type क्या है? Fixed in length. Varchar is a variable length character. Text is a variable length character. But there is a slight difference between char, varchar and text data type. Fixed length जब हम लोग कहेंगे इसको, तो मान लो कि मैंने एक कॉलम बनाया है जिसका डेटा टाइप मैंने char है. So in that case, I'm giving the length for that char as 5. If you insert only 2 values, 2 characters into the column, remaining 3 spaces will be occupied
एज अ ब्लैंक स्पेस और वो मेमोरी रिलीज नहीं करेगा. Those all three spaces will be occupied by a free blank spaces. Right? So that's why it is fixed length character string. Okay, we will take an example. There are explain. Create table. Example strings. First column is of type char. Second data type is of type var. The third one is text. Let me create this table. Run the query. Returned successfully. Okay. Let's insert the values into it. So the first column I am storing ABC. In the second column, this hello world. Third column, this long length string or a text. Let's run. Query returned successfully. Select star one. Example underscore. Let me run this query. Let's see the output. ABC, hello world, and this text. This is a longer text that can vary in the length. First, we will talk about what is the properties of char data type. Character and length of character. By creating table with the column having data type char and its length is 5. The length मैंने 5 दिया है. If I store 2 values or 2 characters या 3 characters, बचे हुए characters वो blank spaces add करेगा, लेकिन वो unused space release नहीं करेगा. That's why it is called as fixed length character string 5 characters. Right? The difference between fixed length and variable length. अगर मैं यही कॉलम varchar नाम से varchar डेटा टाइप का यूज करके बनाता और उसमें सिर्फ मैं 2 ही कैरेक्टर रखता तो रिमेनिंग स्पेसेस भी eliminated, getting freed, and it will not be used or will not be occupied by free blank spaces. That is why it is variable length character. That is why text also variable length data type. Right? So while storing the data into char, var, text, data type columns, you can choose those columns or those data types according to the requirement. अगर मुझे कुछ fixed length character store करना है, then I can go for char data type. For example, I wanted to simply store one single value or two values, 2 characters or single character. जैसे कि जेंडर का कोई कॉलम, उसमें फीमेल मेल ऐसा ही इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर कर. इन दैट केस आई कैन गो फॉर कैरेक्टर. वहाँ पे मुझे पता है, आई ऑलरेडी नो दैट आई वांटेड टू हैव अ फिक्स्ड कैरेक्टर इनटू दिस फॉर्म. इन दैट केस आई कैन गो फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप और char data type with the fixed length data type. If I wanted to store the text information or string information with variable length, जैसे कि name है, ठीक है, कुछ limited amount of description है, in that case I can use varchar. My name is 20 characters for a couple of persons. The remaining space will be released. So वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज unwantedly memory occupy नहीं करें. When you see the table, when if it is having 10 or 15 rows, वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा difference नहीं मिलेगी. If the table having millions of record, at that time the memory also considerable, right? That's why we have to choose the data type according to our need. Right? The next column is text column, which is having data type as text. यहाँ पे कोई length specify नहीं है. No limit is specified. You can store any
information, any description which can be very long in the length, that text information you can store here into this text data type. Right? So these are the string data types we can use according to our requirement. Date data type, you can store a complete date like date, day, month and year. टाइम स्टैम्प जिसमें आप डेट भी ऐड कर सकते हो एंड करंट टाइम स्टैम्प या फिर कोई भी टाइम स्टैम्प, जैसे कि अपना 7 PM 55 minutes 34 seconds, the complete timestamp you can. Let's take an example of date and time data types. Let's create a table, example dates, with two columns. One is date and another one is timestamp. Let me run this. Ran successfully. The first column is event date, second column is event timestamp. In the first event date column, we can simply add the date, and second column event timestamp, here we can add complete date and timestamp. Just check the query, insert into example dates, event date and timestamp. The third one I'm not using this. So two values for two columns. We have created two columns here. One is date and one is timestamp. Just run this. Query returned successfully. Select star from example dates. Check करते हैं हम लोग data, what data we have. See, the first column we are able to store the date for which the data type was date. For second column, where we can able to store the date along with the complete time. Fair enough? So this is how the date or time data type works in databases, to store the dates or to store the timestamps. Next, we will see the Boolean data type, which can store the true-false value or a null value. Let's take an example. Let's create a table. Create a table. The example, we are looking for a Boolean data type. Here, one column I have kept with Boolean data type. Other columns मैंने ऐसा ही गई. Okay. So let's run this query. Already exists example data. Boolean data type. Returned successfully. Let's insert the data into this table and check what value we can insert into this Boolean data type. Let's have an insert query. Insert into example Boolean. First column ID, second is description, the third one is active. हम लोग वैलिडेट कर रहे हैं क्या डेटा हम लोग ऐड कर सकते हैं बूलियन डेटा टाइप की फॉलो. आई एम हैविंग वन, दिस इज एन एक्टिव रिकॉर्ड, जस्ट इन सेकेंड कॉलम इंफॉर्मेशन और वैल्यू. थर्ड कॉलम जो है वहाँ हम लोग स्टोर कर रहे हैं ट्रू. राइट, सो लेट मी रन. Right, query returned successfully. Let's check the data from this table. Select star from example Boolean. Let's run. See, the true value is stored. I can add one more record. Let's check the data.
In the second row, we have created false value. We can also insert the null value as well if you want. You can create with the same values as well. You're just testing the Boolean data type column. Let's check. Checking the data into example Boolean column. I'm having a null value here. Into Boolean column, we can store true value, false value, or null. Thank you for watching.